Alright, G. So we were discussing this question in the previous session. So moving onwards, uh, next further types of next classification of particles we can say, right? So we just said what are hadrons? Hadrons we studied in the start of the fundamental particles. Those particles which are made up of quarks. They are made up of quarks, right? अब कुछ ऐसे particles होते हैं they will be made up of only three quarks, right? There are certain particles which are going to be composed of only three quarks. So the particles which are composed of only three quarks are known as baryons. The quarks which are made up of three quark, sorry, the particle which is made up of three quark is known as baryon. So we know proton is made up of two up and one down quark. So it means proton will be called as what? Proton will be called as baryons. Likewise, we know neutron is composed of what? One up quark and two down quark. So neutron is also a type of what? Baryon, right? So baryon is a classification of such type of particles which are made up of three quarks only. So any particle which is made up of थ्री क्वार्क्स, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो थ्री क्वार्क से बना हुआ हो is known as what? Is known as baryon. और ऐसा पार्टिकल जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बना हुआ हो, यानी कि एनी पार्टिकल विच इज फॉर्म्ड एज अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क, that particle is called as meson. So what are mesons? Mesons, they are made up of quark and anti-quark pair, right? They are made up of quark and anti-quark pair. And what is the example of mesons? Mesons ki example hai pion and kaons. So you should be knowing about the names of these two types. Mesons are known as pions and kaons. So protons and neutrons are baryons. ये एग्जाम में पूछा जाता है कि what are the examples of baryons and what are the examples of mesons. So mesons के examples है हमारे पास pions and kaons. So the classification for the baryons and mesons is as under. Hadrons are classified into two parts. One is called as baryon, another is called as meson. The particles which are made up of three quarks, they are called as baryons, and the particles which are made up of one quark and one antiquark, they are called as mesons. Is it understandable, people? जी सर. Okay. Shall I move on or shall I wait? Yes, speak up. Shall I move on or shall I wait? So you Sir, should move move on. on. Okay. So next, what is the classification of antihadrons? So likewise, हर particle का anti-particle exist करता है. Antihadrons की भी two classification है. One is called as antibaryon, another one is called as antimeson. तो अगर antibaryon वो होते हैं if they are made up of three antiquarks, any particle which is made up of three antiquarks, they are called as antibaryon. An example of this is what? Antiproton and antineutron. एंड लाइकवाइज अगर मैं एंटी मिजॉन्स की बात करूं तो ऐसे क्वार्क
ऐसे पार्टिकल जिस तरह क्वार्क से बने हो जिसमें एक एंटी क्वार्क हो और एक क्वार्क हो, सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंटी मीजॉन्स। और उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंटी पायॉन्स एंड एंटी केऑन्स। सो याद रखिएगा, क्वार्क कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। क्वार्क हमेशा एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट इन अ फॉर्म ऑफ पेयर, और in a form of three. Like three quarks will be together, either three quarks will be together or two quarks will be together. अकेला इंडिपेंडेंट क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर वो थ्री की फॉर्म में होगा तो या तो वो प्रोटॉन होगा या वो न्यूट्रॉन होगा, और अगर दो क्वार्क से बना हुआ होगा तो या वो केऑन होगा या पायॉन्स होगा। इज दिस फाइन? Yes, sir. अच्छा मोहम्मद, यू आर सेइंग दैट एंटी मिजॉन्स एंड मिजॉन्स आर सेम? नो, एंटी मिजॉन का वो वाला पहला पार्टिकल जो क्वार्क था, अब वो बन चुका है एंटी क्वार्क। और पहले वाला जो एंटी क्वार्क था, अब वो बन चुका है क्वार्क। so there's a difference between meson and anti-meson, right? So you cannot say that pions and anti-pions are same. Likewise kaons and anti-kaons are not same, right? They are not same to each other. Anti-pions are not same as pions, anti-kaons are not same as kaons. Is this fine? Okay, moving onwards. Next, we are just going to see the quark composition for the beta decay. तो बच्चों आपको याद होगा मैंने बीटा डिके में बताया था, बीटा डिके में होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली, वन ऑफ द न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन, राइट? वन ऑफ द न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन, प्लस साथ क्या निकल रहा होता है, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा होता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा होता है। तो देखो क्वार्क कॉम्पोजिशन में क्या चेंजेस टेक प्लेस करेंगे जब भी बीटा नेगेटिव डिके होगा। तो जब भी बीटा नेगेटिव डिके होगा, व्हाट इज हैपनिंग, हमें पता है न्यूट्रॉन किस क्वार्क से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ यू डी डी, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यू यू डी। तो इट मींस हो क्या रहा है, वन डाउन क्वार्क इज कन्वर्टिंग इनटू वन अप क्वार्क। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन बीटा नेगेटिव डिके, in beta negative decay, always remember one down quark is converting into one up quark। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक बीटा नेगेटिव डिके के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली वन डाउन क्वार्क इज कन्वर्टिंग इनटू वन अप क्वार्क। Is this fine? What happens in the beta negative decay? In the case of beta negative decay, one down quark converts itself into one up quark. एक डाउन क्वार्क जो है वो वन अप क्वार्क में कन्वर्ट होता है। Shall I move on? सर ये जो लास्ट स्लाइड के लास्ट पॉइंट समझा सकते हैं? लास्ट स्लाइड के लास्ट पॉइंट्स। अच्छा, नोट दैट ऑल बेरियॉन्स और मीजॉन्स हैव इंटीजर होल नंबर चार्जेस। तो यानी कि जो भी आपका पास बेरियॉन बनेगा ना या मीजॉन बनेगा, उसका जो होल नंबर, उसके यानी कि चार्ज, यानी कि अगर प्रोटॉन के ऊपर मैं बात करूं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या आता है, प्लस वन टाइम्स ऑफ ई। यानी कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कभी भी एज अ रियल नंबर नहीं होगा, होल नंबर होगा। याद है, वी स्टडीड चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड। What is the meaning of quantized? It is present in integer multiples of elementary charge। तो वो ये बता रहा है कि बेशक वो बेरियॉन्स हो या मीजॉन्स हो,
एट द एंड उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज होगा, यानी कि 1e 2e 3e 4e एंड सो ऑन सो फोर्थ कुछ भी। सो दिस मींस क्वार्क्स इन बेरियन आर आइदर ऑल क्वार्क्स, या वो तमाम के तमाम एंटी क्वार्क्स होंगे। तो उनको ऐड अप किया जाए तो वो इंटीजर नंबर में तभी आएंगे, या तो वो सारे के सारे क्वार्क्स होंगे या वो सारे के सारे एंटी क्वार्क्स होंगे। और इसी तरह बेरियन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स डोंट एग्जिस्ट इन बेरियन। तो बेरियन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वार्क हो और एक एंटी क्वार्क हो और फिर एक क्वार्क हो। समझ आ रही है बात? जी। ओके। तो मूविंग ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई बीटा पॉजिटिव डिके हो, सो इन द केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके, इन द केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके व्हाट डू वी सी? इन द केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके हमारे पास ये हो रहा है कि जब भी बीटा पॉजिटिव डिके होता है हमें पता है होता क्या है, कि प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा, एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज पॉजिट्रॉन? इट्स अ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। सो प्रोटॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू न्यूट्रॉन विद एन एमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब भी प्रोटॉन प्रोटॉन में अब इसकी क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या होगी? प्रोटॉन किससे मिलके बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ यू डी, एंड इट चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे मिलके बना हुआ है? यू डी डी। तो अब देखें इसमें हो क्या रहा है कि एक अप क्वार्क कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ डाउन क्वार्क। सो याद रखने वाली बात क्या है कि इन बीटा पॉजिटिव डीके वन अप क्वार्क वन अप क्वार्क changes into one down quark. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इन द केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके वन ऑफ द अप क्वार्क कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ वन डाउन क्वार्क। तो एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? सर हमेशा ये बीच वाला क्वार्क चेंज होते हैं? बीच वाला नहीं बेटा, बीच वाला नहीं। मेरा बताने का मकसद ये है कि कोई भी एक क्वार्क जो है वो दूसरे में जा रहा है, तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग में यूं लिखते हैं ना, यू डी, तो वो पहला भी हो सकता है दूसरा, कोई भी क्वार्क हो सकता है। इसमें ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि पहला चेंज हो रहा है या दूसरा चेंज हो रहा है। बस ये याद रखना है कि एक अप क्वार्क डाउन में कन्वर्ट हो रहा ओके। है। इज दिस फाइन गाइस? जी सर। सो दिस इज इट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। So thank you so very much being so much patient for having a, what is happening?